Thank you so much, sir. And now, as the function has beautifully commenced, I would like to call upon my colleague and your co-host for the evening, Ms. Pulak Sparsh, to please come forward and take you all through to the itinerary of the function. Over to you, ma'am. So hi everyone. Feels great to see such an amazing audience and feels even better to see our students who cemented their place in the prestigious law institutes of the country. So here we are to celebrate the thundering success of our achievers. So can I have a huge round of applause for our Noida Institute and Greater Noida Achievers? And can I please invite our achievers to come on the stage? So all the achievers, please. Can we have a huge round of applause, everyone? So welcome achievers. As they say, leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. So here we have our leader, captain of the ship, ace mentor, and a true our director, Mr. Ramanuj Mishra. Can I please invite sir to please come on the stage and address a few words to our achievers. Hey, good evening, all of you. It is a great feeling to organize an event like this. And we all work hard for this day to happen. But when we come and celebrate, still I want to recognize many of the kids who did their job. They put their all hard work, but still their success is not there with them. My best wishes to all of them too. Because it's not a journey, it's not the end of the day, it's not the final thing what we are here to celebrate. It is just one of the moments we want to add in our life. Some of them has actually achieved what they wanted, some of it achieved with time. So this is the moment we wish each and everyone all the best and all the achievers. It's a beginning of your journey. When the people used to say when we were in class 8, 9, so people used to say 10th is the one of the platform where you need to work hard and rest things will be sorted. The moment you come in 11th and 12th, you will start talking. This is the time where you decide your career. You have to be serious. And with time again, we'll start talking about we need to choose professional career where law and IPA and other examinations will come into play. And we say, "अच्छा क्लैट निकाल लो अच्छी तरह से बाकी sorted." People are here, the world is here for many years. I think the cracking CLAT is easier one. Now the difficult part will be. And I think this will keep coming like this, each and every time. So with time the life is going to be tougher, we'll have a more challenges in place. Only way to skilled enough, build up your mental
build up your stamina to face those difficulties, and that's where you can actually sail through your life. Success one way comes in like I used to tell to the kids, success is the cheapest gift you can actually give to each and everyone. When I say cheapest, you don't have to invest anything. But the moment you succeed, each and everybody is happy. So these kids are going to colleges and they probably we are all are celebrated. They will get a great job, great height, great contribution to society, nation. And I think that is the way they should proceed. And each and everything comes in their favor. So what they need to do, they need to just continue the journey for what they have prepared for last 2 years, what they aspire for, what they thought of. If they are clear about their vision, I think this is one of the good foundation they are going to get. So I wish all of you very best, and we are so proud. And I must add to it, in this journey, entire team, Pulak, Neha, Varun, and all Raman, Amit sir, all has been there to work with them, because their success is our success. Like we rate our success with each and every year the way the kids perform. So when they celebrate, probably we actually celebrate together. And thanks to parents who has helped them, all the kids to choose a law as a career. So I always admire by a word says, a law empowers people. The moment you know the law, you empower yourself. I wish all of them, they will understand the law of the land, law of the nation, and then they will actually give a great contribution to society. I think this word I invite team to proceed. Thank you very much, and we'll hear them this week. This is their day. We'd like to hear them. We used to share our thoughts in the class. Thank you. Thank you. So thank you so much, sir. Thank you for those nuggets of wisdom. And now as we proceed with our function, so today's event marks not just the celebration of our achievers who have made us all very, very proud. It is also an important moment for all the aspirants. So this is a platform where the achievers and the aspirants will come together on a common platform to create a beautiful environment of learning and inspiring both at the same time. These people have carved a niche for themselves and they have made us all very, very proud, and so the aspirants will have a huge takeaway from this place today. So proceeding with the function, Pulak will guide us further. Thank you, Neha, rightly said. And now between your smashing claps, we would like to unveil the achievers. So presenting our first achiever of the day, Dhruv Chaudhary, All India rank 104, who's back the position at NALSA Airport. Dhruv is from Lotus Valley International School. Dhruv hobbies are horseback riding, filmmaking and photography. And Dhruv has always been interested in civil rights law, and that made him, was a motivating factor for him to further continue with law as a career. So I would like to now invite Dhruv, and Dhruv primarily would be speaking on how to bridge the gap between schools and law schools. So over to you, Dhruv. Thank you so much, ma'am. Can you hear me? This was obviously a very major question, even in my mind, because maybe 12th के साथ ही prepared for CLAT. So what my mentors told me and what I did was, you need to go along with your 12th. Like, you cannot leave the preparation for CLAT. This is a type of exam where practice is everything. You need to be disciplined. You need to get up every day and you need to do your mocks, you need to read your GK, and basically it's just all discipline. But what I would suggest you all to do, and what I did was, I kept on reading my chapters because I was from humanities background. You all might be, some of you might be in 11th, so you guys can focus more on that. But if you guys are in 12th,
I would suggest you keep on covering whatever your school gives you and like whatever you feel is weak. So when the time approaches, and normally they were like 2-3 months before CLAT, like the CLAT gave you to prepare. But this time that did not happen. We had 4 days. I personally had 4 days to prepare. So like that was the only way I could do it. And that helped me out a lot. I got 93% in my first term exams. Not very good, but I was prepared for CLAT anyway. We also need to understand that board is not our actual focus. For a law student, board really doesn't matter that much. And you somewhat need to focus on your CLAT exam and your mocks. Basically, like I had an interview, even in that I said, mocks will teach you how to perform under pressure. Giving the mocks offline is, for me, it was everything. Going to the center, filling out the OMR, and giving the mock, that is basically what helped me in that moment. So I would say that you need to, carry your board studies along with the CLAT preparation, and do not get stressed. That's all. Stress ज़्यादा नहीं लेना. You can talk to our teachers, especially Pulak ma'am. Whenever I was like, I talked to her and I was like, "Arey bro, just chill yaar, it will happen. Everything's alright. तूने पढ़ रखा है." But then again, these our mentors, Varun sir, Neha ma'am, Pulak ma'am, Ramu sir, they're always there to support you. But you need to understand, you have to be available to do the labor. This is a very labor-intensive paper. You need to put in the work, and the result will follow. Thank you so much. So very rightly said, Dhruv. Stress to bilkul nahi lena chahiye, and mocks is the thing. So I think Dhruv and I sat and I was actually discussing his success story. So one thing that he actually emphasized on was consistency is the key. You have to be very, very consistent, starting from day one till the end. And I think Dhruv narrated an instance where he said that he had to attend a wedding of his, I think your sister's wedding, and he did not even leave mock that day. So that's the level of dedication all of us are actually looking for. So yeah, good round of applause for Dhruv, please. Our next achiever of the day is Saksham Rai, All India rank 114. Saksham has secured a seat at Nalsar, Hyderabad. So, Saksham is from Seth Anand Ram Jaipuria School. Saksham is a poet, writer, debater with an interest in European history and politics. And Saksham aspires to hold the second highest constitutional office for Vice President of the Republic of India someday. So, Saksham will be speaking about hard work versus smart work, how to channelize your energy in the right direction. So, over to you, Saksham. Hi everybody. So basically, unlike my group over here, I think I should go by Hindi because मेरा यहाँ पे purpose है तुम लोगों को बताना, ठीक है? How my journey and preparation was as such, and how that would help you. So basically, मेरा जो topic है वो actually stands to because I'll define myself as a lazy man with a very, very strong resolve. And when you are as lazy as I am, and with a very determined resolve to crack the CLAT exam, so then you would look for smarter ways rather than to put in those hours and solve all those books, because you realize the fact that you need to be efficient in what you do. So there were voices throughout my journey, ठीक है, जो मेरे को बोलेंगी that go through all these books, ये सबको करो और बहुत पढ़ो. A very funny story as well. My very own dad, ठीक है, he bought this like मोटी उन्होंने कोई CLAT की book जो थी, ठीक है, वो लेके आए थे, and he told me कि इसको पूरा solve करो बस इसमें, and I went to the कर लूँगा be considered hard. I know कि मैं छोड़ने भी नहीं वाला, ठीक है, and मैंने ultimately इसको छुआ भी नहीं, because I was just clearing out my room the other day and I realized कि there were so many books out there for me to do all that, but I realized what matters as such is to put in the work in a more smarter way. So what would I do basically, ठीक है, वो है कि mocks के थ्रू. There is nothing more important than mocks. मैंने अपनी journey mocks के थ्रू देखी है,
ठीक है, किस तरीके से सिर्फ मॉक्स कर करके मैंने आपको इम्प्रूव किया। तो मैं यहाँ पे 2 साल था, 11th एंड 12th। 11th के साल के अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिए गए थे, है ना। पूरा खाना मेरे को सारा लीगल करा दिया था, इंग्लिश ओवर द कोर्स टाइम सीख जाते हो, एंड वो मॉक्स में हेल्प करते हैं। एंड हमारे प्यारे बरन सर ने मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया था। तो इसलिए मेरे को 11th के बाद मेरे को रियलाइज हुआ था कि 12th जो स्टेज है उसके अंदर देयर आर 2 स्टेप्स, ठीक है। मेरे को अपने आप को इंप्रूव करते जाना है मॉक्स के थ्रू, और मेरे को जीके करना है। मेरे जीके हमेशा नया आता रहेगा एंड वो मेरे को जीके अप टू डेट करना है। तो मैंने 2 चीजें इसमें देखी, ठीक है, कि मॉक्स के अंदर आप कॉन्स्टेंटली मॉक्स करोगे। सो मेरे स्टार्टिंग के मॉक्स रिजल्ट थे, दे वर इन 70s आउट ऑफ 150, राइट। सो मेरे 70s से आ रहे थे, एंड आई वाज लाइक लिटिल बिट I was taken back as such, but then I thought, let's look at what my mates are getting. So ये लोग भी हैं जो मेरे साथ ही हैं, है ना, and some people else, and इनके हम लोग के same scores आते हैं। I think okay, I might improve over due course of time, and even सर ने मेरे को बोला था कि जब तक तुम अपने आसपास देख रहे हो, तुम 90% लेवल में आ रहे हो, तुम्हारे आसपास के तुम ऊपर स्टैंड कर रहे हो, तो इवेंचुअली उस लेवल पे आ जाओगे, तुम जब तुम्हारा एक्चुअल पेपर होगा तुम क्रैक कर सकते हो उसको। एंड देन आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट्स गो विद इट। एंड ओवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैंने सिर्फ मॉक्स किए। सो मेरी वीकली लाइफ के अंदर मैं मंथन पढ़ता था। मेरे पास न्यूज़ कैनवस था, मंथन था, 2 चीजें थी। न्यूज़ कैनवस को डेली पढ़ता था मैं, मंथन में वीकली पढ़ता था। और उसके ऊपर से मैं एक चीज बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनली मेरा अकेले का ओपिनियन है। सच मैंने आज तक एक भी जीके का नोट नहीं लिखा, ठीक है, कोई नोटबुक नहीं भरी। मेरे पास दोस्त थे, नोटबुक्स पढ़ा दी, सारा जीके निकाला, मैंने क्या नहीं। आई प्रेफर विजुअलाइजेशन, है ना। For example, I remember this event जिसमें था that तमिलनाडु गवर्नमेंट जिसने मैटरनिटी लीव को उन लोगों ने इंक्रीज कर दिया to 12 months and 40% रिजर्वेशन कर दी उन्होंने के लिए। तो जब मैंने इवेंट पढ़ा तो मेरे दिमाग के अंदर मैंने विजुअलाइज किया, एसोसिएट किया उनको, ठीक है। मैंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर टैलेंट की थ्रू डाल दी, एक प्रेगनेंट की थ्रू डाल दी, और उसके थ्रू मेरे दिमाग में पूरा एक्चुअल इमेज मेरे दिमाग में अब भी है वो पेपर, ठीक है, कि वो पेज डाउनलोड टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कीवर्ड्स हैं, अगर मेरे को वो आएगा मैं रियलाइज करूंगा नहीं इसको ऑलरेडी पढ़ रखी है। बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे दिमाग में ऑलरेडी एम्बेडेड हो चुकी है उस तरीके से। मैंने एक भी चीज लिखी नहीं है उनमें से, लिख के मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की उस चीज के अंदर। एंड अगेन द थिंग वाज कि इस चीज को मैंने कॉन्स्टेंटली बेसिस पे किया है। जीके वाज द ओनली थिंग व्हिच आई एम एंश्योर दैट वो कांस्टेंट रह रही है। बाकी सब आई ट्रस्ट इन माय सेल्फ कि जो जितना भी लीगल है, जितना भी कॉन्स्टी है, जितना भी इंग्लिश है, ये मेरे को याद रहेगा जो मेरे को 11th में लोगों ने पढ़ाया है ना। और वो मेरा बार बार रीअफर्म होता जा रहा था बिकॉज मैं मॉक्स करते जा रहा था। तो मैं अपने मॉक्स पे फोकस करता था और अपना से जीके फोकस करता था। एंड ओवर ड्यू कोर्स में मैंने रिजल्ट चेंज होते देखे, ठीक है, 70 से 80 90 एंड लास्ट के आई गेस 10-15 मॉक्स जो थे उन सब में मेरे 100 पे गए। देयर वाज वन एक्सेप्शन जिसमें मेरे 90s में आए थे, एंड उसमें क्या किया था, सबके 90s में गए थे बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज फार टफर मॉक एज सच, वरना मेरे सबके अंदर 100 के ऊपर आ रहे थे। सो यू नीड टू रियलाइज द फैक्ट कि तुम जो हो, तुम्हें यू हैव टू पुट इन योरसेल्फ इन जीके, बट दैट टू इन अ स्मार्ट फैशन एज सच, ठीक है। तुम अगर पूरे मंथन चार्ट जाओगे, तुम पूरे अगर न्यूज़ चैनल स्टार्ट करोगे, एवरीथिंग तुम पढ़ोगे, इट वोंट वर्क आउट फॉर यू, ठीक है, बिकॉज इतना सारा कंटेंट होता है, यू कांट कोप अप विद दैट। यू नीड टू रियलाइज दैट तुम्हें सिलेक्टिव इवेंट्स नहीं है, सिलेक्टिव इवेंट्स के अंदर तुमको सिलेक्टिव चीजें याद रखनी है। एंड उसके ऊपर से भाई मॉक्स इज, ठीक है, आई गेस सब बंदे को बताएंगे, ठीक है, बिकॉज मॉक्स आर एसेंशियली व्हाट हेल्प्स यू टू ग्रो इन योरसेल्फ एज सच। तुम्हें अपनी प्रोग्रेस मॉक्स से मिलेगी। एंड या दैट्स ऑल। एंड आई थिंक एज वी फैमिली मेरे हिसाब से मैं सबसे ज्यादा बोल दूंगा एक्चुअल स्टार्ट वाइज, क्योंकि ये बहुत सारी जनरल चीजें भी आ जाएंगी, बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं जनरल नहीं रखेंगे, ठीक है, सच बोलेंगे, जो सच था, है ना, सच बोल के आएंगे। तो दैट्स ऑल गाइस, एंड होप फॉर यू टू नो एक्चुअली आपके साथ यहाँ पर। Thank you so much, Saksham. And those were some really helpful and beneficial tips on GK. And now may I please ask our aspirants, who's your go-to destination for GK? Varun sir, for sure, undoubtedly. A huge round of applause for Varun. Okay, so our next achiever. Very proudly, let me welcome before you Akhil Mahesh. Akhil is All India rank 414 and has bagged a position at NUJS Kolkata. Akhil is from Mayur School, Noida. He has taken part in various debates and MUNs, and due to his keen interest in the same, he has chosen law as a career, very rightly. Until we
till we talk about how to strike a balance between academically strong and weak areas, Akhil will throw some light upon this scene. Please welcome Akhil. Hello everyone, a very good evening. So we all have weak and strong areas, but the basic point is that for a CLAT as an examination, there are 5 sections, and even if you have 3 average sections and 2 very strong sections, you can still get into the best law school in the country. So the main aim is that you need to maintain a consistent level of performance in each and every section, as I think Dhruv also alluded to the same. Consistency is the key, and while you are thinking of your strong and weak areas, it's very important to make a plan. Because if you have a plan of and an understanding of, yeah, this area is weak and this area is strong, then you can go about addressing the same. Like for me, my GK was weak. So I think in the last 3 months, and my other sections were strong. So in the last 3 months, my main focus was GK, while the other sections I had gained a certain level of consistency and I was scoring to 85 to 90 percentile. So I was quite happy with the other sections. The main aim was that I can focus on my weak points while maintaining a similar level of performance in my strong areas. Now the main point is that while you're giving the exam, you should not go with the mindset that, yeah, this is my weak section, this is my strong section, and accordingly I'll attempt. Because when you look at the paper, I think these guys will also tell you, a few of them might have maths as a weak section, but for the CLAT examination, the maths was the easiest section, and I think whoever got into any law school, they'll probably say maths was the saving grace. Because a lot of people who banged on GK actually, had a terrible experience with their paper because the GK was very, very difficult for this examination. So the main point is that you need to maintain a mindset which is that I will give all sections equal priority and give my mocks religiously and not skip any mock just because I don't feel like it. Even if you are feeling quite lethargic, you should try and still give that mock because you don't know how you will be feeling on the day of the examination. And the point that I'll come back to the point of your strengths and weaknesses. To get a balance between them, I would suggest that you, first of all, you should write down what your weaknesses are and your strengths are. And then you can see which are weaknesses you can actually work upon, because some of them you can't work upon them. Like you might find some weakness which are like, even if I try, I won't be able to improve upon this. Then you can aim upon strengthening an area which is already your strength even more to compensate for that particular weakness. And that allows you to, and when you have a particular weakness, you should not lose any sleep over that, because at the end of the day, you don't know what's going to come in the exam. You might keep on preparing for a particular topic that you're weak at, and that might not come in the examination. You have to keep an optimistic mindset and keep going on. And I'm sure if you listen to your amazing faculties, you will do well in the examination. True words, Akhil. So our next achiever of the day is Vijwal Pundir, a student of State Anandaram Jaipuria. Vijwal has secured a seat at NUJS Kolkata. And can the audience be a bit more energetic, please? So Vijwal believes in charity and social welfare and wants to pursue law to fulfill the same. He aspires to become a civil servant or a politician. Now Vijwal will be addressing on what should be the mental framework on D-Day. Everyone has been talking about exams की preparation कैसे करनी चाहिए, strategy क्या होना चाहिए, but D-Day के दिन mental framework क्या होना चाहिए, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं. So probably we'll give Vijwal a chance to talk on the same. Over to you, Vijwal. Thank you so much, Pulak ma'am, for such a beautiful introduction, first of all. I'd like to start by giving a heartful welcome and thank you to the whole team of Career Launches. They were always there with me. I had one sir, एक बड़े भाई जैसे बन चुके हैं अब तो ये
was always there to हो जाएगा, नहीं बातों में कोई दिक्कत नहीं है. We used to talk about रात को 12 बजे कॉल करते थे. Then we have Pulak ma'am. She was always there nagging कि मॉक कर लो, क्लास कर लो, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, हो जाएगा. She was always there having back support. We have Neha ma'am. She taught us English and logic. Then रामानुज सर, मेरा CAT उतना अच्छा गया नहीं था ऐसा मुझे लगा, तो एलिट बचा मतलब रामानुज सर के साथ हम लोग मैं रुक गए कि सर क्या करें, अच्छा नहीं गया दोनों का. तो he was there कि नहीं एलिट बचा, एलिट करेंगे, नहीं एलिट बचा. So everybody was there helping us out. So a big congratulations and thanks to them as well. We can have a round of applause for Mr. Gulam. Right. So my topic is कि क्या mindset होना चाहिए on the day of the D-Day. हम लोगों ने मॉक्स कर लिए, हम लोगों ने जीके पढ़ ली, हम लोगों ने सीनियर से एडवाइस ले ली, हम लोगों ने जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ज्ञान दे दिया कि कैसे क्या क्या करना है. हर चीज हो गई, लेकिन एंड ऑफ द डे बात वहीं आ जाती है कि आप डीडे पे क्या करके आए हो. आई हैव सीन पीपल जिनके थ्रू आउट द मॉक्स 110 प्लस स्कोर थे एंड ऑन द डे ऑफ द पेपर 60, 70, 55 समटाइम्स. एंड देयर वर पीपल जिनके 70, 80s में कंसिस्टेंटली चल रहे थे, बट दे बैक अराउंड 110 स्कोर इन द रियल पेपर. So the whole play is about the mindset that with which you are giving your paper. So for that matter क्या होता है कि जब आप अपना दिमाग ब्रॉडन कर लेते हो, लेट्स से कि मैं सोच ले जा रहा हूँ कि मेरा लेट्स से लीगल बहुत स्ट्रांग है, मैं सोच ले जा रहा हूँ लीगल बहुत खराब रहेगा, और मैं ऐसा सोच ले जा रहा हूँ कि लेट्स से मेरा लॉजिकल बहुत खराब है तो लॉजिकल अच्छा आ जाएगा. देयर इज अ गुड चांस कि ऐसा हो सकता है कि जो मैच है लोगों के लिए बहुत टफ है. अकेला राइटली साइड इस बार का मैच काफी आसान है. तो जितना आप अपना दिमाग खोल के जाएंगे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जैसे कुछ चांस की ठीक है 5 साल पुरानी आ जाए, इस बार भी 2 साल पुरानी आई गई थी तो 5 साल का पता नहीं क्या पता आ जाए. तो जितना आप अपना दिमाग खोल लेंगे, जितनी पॉसिबिलिटीज बढ़ा देंगे, उतना पैनिक खत्म हो जाएगा आपका. पहला. दूसरा पॉइंट ये है, आई वुड लाइक टू थ्रो अ क्वेश्चन टू यू ऑल. आप में से कितने लोग हैं जो राम जेठमलानी को जानते हैं? He's a very famous lawyer. They will please raise their hand. Parents as well. जो लोग राम जेठमलानी को जानते हैं, please raise their hand. Right, correct. अच्छा, please. अब ये बताइए कौन-कौन लोग ये जानते हैं कि राम जेठमलानी का कॉलेज कौन सा है? Hardly 2 people. So there lies the difference. कॉलेज हमारी जिंदगी नहीं है. जिस दिन हम लोगों ने पेपर को जिंदगी बना लिया, उस दिन हमारा पेपर खराब चला जाएगा. Because हम लोग एक प्रेशर बना लेंगे. हम लोग उसको उस माइंडसेट से एज अ पेपर नहीं ले पाएंगे. सो द मोमेंट वी थिंक कि दिस इज लाइफ, अगर ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, दैट इज रॉन्ग. जितना हम लोग अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सी व्हाट वी डिड, मैं और ध्रुव एक साथ मॉक देते थे. हम लोग हमेशा मॉक को एज अ पेपर ट्रीट करते थे, पेपर को भी एज अ मॉक ट्रीट करा. पेपर देने गए, पहले आधे घंटे पहले गए, ओम चैंटिंग करी, अपने आप को कस्टम करा कि हाँ कौन आदमी है, कौन आदमी नहीं है. शुरुआत में फियर ऑफ द अननोन रहता है कि जो सामने वाला आदमी है क्या पता मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ गया, जो मेरे पीछे वाला है क्या पता बहुत घटिया पढ़ गया. यू नेवर नो. ऐसा हो सकता है मेरे जो उम्र में आदमी मेरे बगल में बैठा है वो यार मत है. आदमी को ऐसा ही लगता है जब वो पेपर देने जाता है. लेकिन जब मैं पेपर देके उठा तो जिस लड़की से मैं सामने डर रहा था, उसने सिर्फ 4 कॉलम करे. 4 कॉलम में से 4 होल मार्क में मार्क करे. इसको मैं सोचा था इसको तो बहुत कुछ आता होगा. तो यू नेवर नो. सो नेवर हैव दैट फियर ऑफ अननोन. बी रिलैक्स, बी काम. All you know is कि आपने पूरे साल मेहनत करी, you've been consistent, you've given your mocks. So हमको एक इतनी चीज पता है कि अगर मैंने पूरे साल कंसिस्टेंटली मेहनत करी है, तो मैं यहाँ आके अच्छा ही करने वाला हूँ. Don't be overconfident, but जितना आप अपने आप को ब्रॉड कर सकते हो, माइंड को जितना एब्जॉर्ब कर सकते हो, that would be great and that would be the key. कुछ डरने की बात नहीं है. Just a paper. नहीं हुआ अगले साल दे देना, नहीं हुआ तो किसी और अच्छे कॉलेज में हो जाएगा. Because अगर आप इस स्टेज पे ऐसे आ जाते हो जहाँ पे आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो, तो वहां पे आप कि मेरा कल ही नहीं होगा, मैं क्या करूंगा जिंदगी में, राइट? इट हार्डली मैटर्स. ऑल यू नीड टू नो इज कि उसको जिंदगी नहीं बनाना है, बिकॉज वो प्रेशर डालेगा. आप बोलोगे कि यार मेरे पेरेंट्स नहीं करते हैं मुझे प्रेशराइज, कोई घर वाला नहीं करता है, कोई कुछ प्रेशर नहीं है मुझ पे, लेकिन साइकोलॉजिकली क्योंकि आप प्रिपेयर कर लो तो एक अनकॉन्शियस प्रेशर होता है कि नहीं हुआ तो क्या. तो प्रेशर जिस दिन आप निकाल दिया उस दिन आप एआर बन रहे होंगे. थैंक यू गाइस फॉर आने से पहले ताली इसीलिए ज्यादा बजी.
great visual rightly said. Our next achiever of the day is Samriddhi Rastogi. Samriddhi is from St. Thomas School in Rapuram. Samriddhi has secured a seat at CNLU Patna, very close to my heart. So I'm an alumni of CNLU Patna. She's been a keen reader, loves reading books and novels. She has also actively participated in a lot of debates, MUNs and youth parliaments, which contributed to her research and speaking abilities. So Samriddhi will be talking about what should be the strategies when the countdown begins. So probably 1 month to 15 days before the exams, what are the things that we need to keep in mind? To you, Samriddhi. Huge round of applause for her, please. Good evening, everyone. So what worked for me in the last 1 month, I would say, was giving mocks consistently and doing GK. So GK was something that I never missed on. And I used to be really weak in GK when I started my preparation, and I really dreaded doing GK. So I found this friend that was in my coaching center, Mansi उसका नाम था, and we used to do GK together. हम एक साथ बैठते थे रात को, and हम 2 घंटे 3 घंटे GK एक साथ करते थे. मॉक से पहले करते थे, and then we would discuss the GK जो मॉक में आई हो, and we would do such stuff. तो GK was one thing that I never quit doing, चाहे मेरे बोर्ड हो, चाहे मेरा कोई पेपर हो, मैं 1 घंटे करूँगी, थोड़ा ही करूँगी, न्यूज़पेपर पढ़ूँगी, GK करूँगी, कुछ तो GK का करेंगे. And then mocks obviously, I never missed out on any mock. जो CA देता था, I would do it. I would come to the center and write the mock. अगर मैं center नहीं आ पाई, तो मैं online दूँगी, but मैं mock दूँगी. I would never miss out on a mock. तो लास्ट के 15 मंथ में GK तो what I used to do कि हम मंथन से करते थे. तो हम जब भी कोई भी मंथन करते थे, तो बारी-बारी हम उसमें एनोटेट कर लेते थे कि ये इवेंट इंपॉर्टेंट है, ये सुना हुआ है, ये हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ये इवेंट इस मॉक में आया था. तो हम इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स थे वो मार्क कर देते थे, टिक लगा देते थे उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मंथन से मार्क कर देते थे. एंड न्यूज़ स्टैंडर्ड्स हम ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन के बाद करते थे. एक साथ कुछ इवेंट्स जो हमें रेलेवेंट नहीं लगते थे हमारे हिसाब से, हम उसे तब छोड़ देते थे. बट अगर हमें कहीं वो दिख गया मॉक में या कहीं और किसी और पेपर में दिख गया, तो हम वो कर लेते थे बाद में. तो वी डिड नॉट यूज टू मिस आउट ऑन GK. पर क्योंकि हम एनोटेट करके हमेशा रखते थे, तो एंड मंथ में हमने वही मंथन खोले, वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया. उसके बाद जो कंदर सर एक मास्टर स्ट्रोक में हर लिस्ट भेजते थे, जिसमें इवेंट्स होते थे, इंपॉर्टेंट क्लास स्पेशल इवेंट्स होते थे, जो हम पेपर से पहले रिवाइज करके गए थे अच्छे से. We would study everything जो उसमें था, हमने हर डिटेल देख ली. कुछ इवेंट्स जो नहीं भी दिए हुए थे, शायद हमने मंथन से मिस आउट कर दिया, न्यूज़ स्टैंडर्ड से मिस आउट कर दिया, कि इंपॉर्टेंट है, तो उसे गूगल कर लेते थे, उसे 5-6 पॉइंटर्स उससे देख लेते थे, उसे याद करके अच्छे से चले जाते थे. सो दैट इज व्हाट वी डिड इन GK. उसके अलावा मॉक्स को एनालाइज किया अच्छे से, एंड तक मॉक्स को अच्छे से एनालाइज किया, मॉक्स की GK बार की, देख के कि हाँ ये यहाँ से आया था, हाँ ये याद है, तो उसे पढ़ लेते हैं वहाँ कहीं से भी. बट उसके अलावा भी हमने जो किया था, एंड के कुछ मंथ्स में मैंने मैथ के कुछ टॉपिक्स रिवाइज किए थे जो मुझे मॉक्स में नहीं आ रहे थे. तो मैथ के कुछ टॉपिक्स मैं फॉर्मूलेज वगैरह ये सब रिवाइज करके गई थी एंड में. तो दैट रियली हेल्प, क्योंकि इस बार मैथ इजी आई थी. अगर मैंने नहीं किया होता शायद वो एंड में कुछ फॉर्मूले रिवाइज या कुछ वो मेथड रिवाइज, तो प्रॉब्लम मुझसे होती भी नहीं, क्योंकि आई हैव नेवर बीन दैट गुड एट मैथ्स. तो वो हेल्प किया. उसके अलावा CR वाज वन ऑफ द सेक्शंस जो मेरा इवेंचुअली विद मॉक्स इंप्रूव हुआ है. तो उसके लिए मैंने कंसेप्ट रिवाइज किए थे. सो CL प्रोवाइड्स दिस कोर्स नोन एज CR नगेट्स, जो कि एस्पिरेशन की साइड पे ही होता है. इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी. मैंने वो कोर्स में से जितने भी उसमें सर ने कंसेप्ट बताए थे या जो भी उन्होंने सिखाया था, मैं वो सब रिवाइज करके गई थी. तो दैट रियली हेल्प, एंड आई डिड गुड इन फेयरली गुड इन लॉजिकल सेक्शन, आई वुड से. So these were some of the things that I used to follow in literacy, doing mocks and GK consistently without any break. फिर जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो वो बताया वो शायद भूल गए होंगे आपसे, आपको लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट है, वो सब एक बार रिवाइज करके गई थी. सो दिस इज ऑल दैट आई डिड एंड इट रियली वर्कड. थैंक यू. Thank you so much, Samriddhi. Well, I guess a lot of takeaways from this place after this evening. Am I right, aspirants? And I hope all the parents are also having a good time. Okay. So our next achiever of the day is Megha. Megha Chauhan, student of Father Agnes School, Noida, has secured a position HPNLU Shimla. Okay, so Megha has been the subjector of her school magazine and has organized many events and competitions.
She is an avid reader since the age of 6, one of the reasons why she has chosen law. So now Megha will be talking about how taking a drop has helped her ameliorating her performance. A very good afternoon to everyone. When I got to know I'm supposed to address all of you here today, I have a cousin, Anita. She was with me, and she was like, Megha दीदी, आपको सबसे पहले ये बोलना है कि आपने drop कैसे लिया? In spite it is considered a taboo or stigma in the society. But quite honestly, when I thought about it, I had no other option. I had options, but I did not want to consider them at that time, and drop was my best option. It's true, people question because I am a very rare and a weird case, I guess. Because मैं यहाँ पे स्पैन की बच्ची थी, मैंने 2 साल पढ़ा, but due to some reasons मैं नहीं पढ़ पाई अच्छे से, and then मैंने drop कर लिया. So my 2 of my best friends were like पागल हो गया क्या क्यों कर रही है नहीं होगा, but then my parents supported me. Bullet ma'am was like हो जाएगा ले ले कोई बात नहीं, so I did it. So if anyone here is in the same position as I was last year, and your instincts tell you, and you know you have the capability and the potential, then go for it. So coming to the gap year, the first few months were a breeze actually, and they were a breeze because my score in mocks were increasing. They were not good, but there was an increase. Poetic justice kind of, but my score in CLAT was 56.25, and जो मैंने इस साल mock दिया था, उसमें भी मेरे पहले mock में score 56.25 था, so that was like coincidental. उसके बाद the real struggle started in January because believe it or not, from January mid to March mid, in 10 mocks consecutively, I scored 67. ना एक नंबर का improvement था, ना एक नंबर पीछे जा रहा था, बस 67, and I was really confused because I was working hard in the wrong direction, I think. So coming to the why, my English and legal were always strong, thankfully, and maths was the weakest. उसके बारे में बाद में बात करूँगी अच्छे से. Logical was bad, but then as somebody said, I also took the Sienna Gibbs course, and their sir told us that whatever concepts I am teaching you, you are not going to remember them in the exam. In the exam, you are just going to remember one technique, that is elimination, and you are going to use that. So for that, you have to practice and make yourself master elimination and just all the concepts, so that you just get the answer instinctively. So, and the next one is GK. And in GK, I met Kandarp sir in December, and Kandarp sir said, study group banao, abhi tum logo kuch nahi hoga yaar. We knew nothing. So I made a study group. पहले दिन 11 बच्चे आए वहाँ पे, दूसरे दिन 5 बच्चे, तीसरे दिन बस 3 बच्चे रह गए थे. मैं, निक्षा, अभी 2 और दोस्त. And then afterwards, Akhil and one more, Manishi joined. We used to discuss everything there, not only GK, but logical. Sometimes I think once or twice we even discussed whole mocks, which were very very difficult. और हम सबके उसमें बहुत करने मार्क्स आए थे, तो हम वो डिस्कस कर रहे थे. So that was really helpful, the study group. And then the second thing, जब वरुण सर जी के टीचर मिले, I'm kind of jealous of you all कि तुम्हें स्टार्टिंग से वरुण सर पढ़ाते हैं. मुझे हैंडली टेक्निक में वरुण सर पढ़ाने आए थे. And then वरुण सर के सामने में एक बार exactly नहीं रोई थी, पर kind of रो पड़ी थी कि सर जी के नहीं हो रहे. तो सर ने कुछ चीजें बताई, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल बिकॉज इस बार जी का पेपर कहीं से भी आ गया था, तो तुम लोगों को भी ये लगा कि जितना ज्यादा पढ़े उतना अच्छा है, बट दैट्स नॉट द केस. यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज बिकॉज वरुण सर ने ऐसे समझाया था दैट दिस होल रूम इज जीके. So what you might try to do is that you will try to do something and something. Instead of that, you have to set your boundaries, and in those boundaries you have to do everything in it. So what my sources were: Manthan, News Canvas, Kandarp sir ke session, and Varun sir ke sessions, and newspaper, most important, newspaper. So then eventually my marks in mocks increased up to 104 at one point. Afterwards, at the end, I made mistakes, obviously, coming to maths. Believe it or not, I studied maths. I don't think Raman sir or मेरे पापा को मुझ पे विश्वास होगा. But I did as much maths as possible. I solved the class sheets, attended classes, solved more questions, asked doubts, and still messed up because of OMR. So first foremost, you are not going to have 120 minutes in the paper. Get out of that bubble. You have to fill the OMR. There is a 9-digit roll number and around 5 to 6 digits of OMR number. So I took it casually कि ये इतना सा है, ये तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं. पेपर में मेरे को 3-4 मिनट लग गए और वहाँ मेरा टाइम चला गया मैथ्स का, and I kind of panicked, and I was able to do just one question.
So there I lost around 3 to 4 marks. So there are two situations. One, I could have got those 3 to 4 marks and पता नहीं क्या होता फिर आगे अच्छा नहीं तो मिलता. Second, I would have not picked myself up after maths and मेरा पूरा पेपर ही बेकार चला जाता तो फिर मेरा क्या ही होता. So at the end जो हो गया. I would like to advise you कि तुम as of now for just 5-6 months are left OMR mock में भी OMR fill करो. make up a roll number, make up a OMR number and fill that. आगे जाके बहुत हेल्प करेगा because as you fill that तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी. With all things said, this year helped me to introspect, understand and grow as a person, and I would also like to thank my parents, teachers and everyone for trusting me once again after whatever I did last year. And I would like to end with a quote from one of my favorite books that when you come out of the storm, you won't be the same person who walked in, and that's what the storm is all about. Thank you. Thank you, Megha, for such great words. And one thing that I would specifically like to point out is, बहुत लोगों के माइंड में ये रहता है कि ड्रॉप लेना isn't a very good thing. There are a lot of students, a lot of parents, in fact, who think that we would not drop, we would not take a drop, we would not waste our year. हम किसी भी कॉलेज चले जाएंगे, but हम शायद एक year waste नहीं करेंगे. So what I have actually understood over the years is, drop लेना is no बुरी चीज, as long as you're dedicated and determined and you have one goal very clear in your mind. So मुझे frankly ये लगता है कि अगर आप NLSIU चले गए या नालसा चले गए या for that matter of fact किसी भी अच्छे national law school या अच्छे law school चले गए, the day you are in that school nobody is going to ask you कि आप drop लेके आए थे या 12th के just बाद आए थे. So one thing that's very straight and very clear is that you should have your goal set, fixed and very clear. So yes, with that, our next speaker achiever for the day is Shaurish Srivastav. Shaurish Srivastav is from CRPF Public School. He's bagged a place at HPNLU Shimla. So Shaurish has a very keen interest in reading and writing, which is of course one of the many reasons why he was attracted to the field of law. And Shaurish will be speaking on art of effectively taking mocks. How do you go about mocks? Which section should one attend first? How to leave the questions that you don't know? Basically, how to effectively take mocks, keeping in mind that we have negative marking for these exams. So for people who don't know, we have a negative marking of 0.25 for these exams. So over to you, Shaurish. Hello everyone. तो सबसे पहला तो मतलब अगर सबसे पहला मॉक्स इफेक्टिवली देने से पहले क्वेश्चन होता है कि गिव मॉक्स एट एनी कॉस्ट, क्योंकि हम शुरू नहीं करते मॉक्स देना किसी भी हालत में. मतलब मैं अपने आप को जानता हूँ, 7 से 8 महीने पहले मैं सोचता था कि मॉक्स क्यों दूँ, अभी मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ. बट सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा. लास्ट डे भी तुम जीके पढ़ रहे होगे, लास्ट डे भी तुम कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे होगे, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा. और उसको लेके बैठना कि मॉक्स लास्ट में देंगे 1 महीने पहले 2 महीने पहले, वो फिजिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता. तो मॉक्स देना शुरू करना है, चाहे सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, उससे अभी लाइक ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता. और नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे जरूरी कि अगर मॉक दिया है तो उसे एनालाइज करना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर चाहे तुमने 35 मॉक्स दिए हो, 40 दिए हो, 70 दिए हो, 100 मॉक्स दिए हो, अगर तुमने एक भी मॉक एनालाइज नहीं किया तो वो 100 मॉक्स, वो 70 मॉक्स, वो सारे नलिफाइड हो जाएंगे. तुमने कुछ नहीं पढ़ाई करी, तुम्हें कुछ हो नहीं पाएगा. मतलब क्योंकि जब तक एनालाइज नहीं करोगे ना समझ नहीं आएगा कि गलतियां क्या है, गलतियां कहाँ हैं, कैसे करना है उन्हें ठीक. और जब समझ आएगा कि गलतियां कहाँ हैं तो उस पार्टिकुलर चीज पे तुम सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो. तुम अलग अलग चीजें करके तुम जान सकते हो और उसे इम्प्रूव कर सकते हो. और तीसरा पॉइंट है कि कौन सा ऑर्डर, क्या ऑर्डर फॉलो करना चाहिए. तो 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन सोचे तो कितने ही सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. और मतलब ऑर्डर चूज करना एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है. तो मुझे नहीं लगता मैं बता सकता हूँ कि कौन सा ऑर्डर अच्छा है. हर बंदा जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है, प्लस जिसका मार्क्स आ रहे हैं, सेक्शन टेस्ट से पता चलेगा कि किसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या प्रिपरेशन ज्यादा है इसमें, उससे पता चलेगा कौन सा सेक्शन बढ़िया है, कौन सा सेक्शन पहले कर सकते हैं. उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि जो सेक्शन आ रहा है जिसमें मार्क्स आ रहे हैं वो पहले करने से पता चलेगा
वो फेल करने से मोरल हाई होगा, जिससे अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो तुम उसमें ज्यादा टाइम देके उसे कंपनसेट कर सकते हो। बस, थैंक यू। Thank you so much, Shorin. So these were our achievers. Can we please have a big round of applause for all of them? So ladies and gentlemen, as we know that behind the success of every student, the mentors play a very, very crucial role. And it would be very, very unfair, and I guess the event itself would not be complete if we do not hear something from the ace mentor and the guardian angel. Please welcome, between your smashing claps, the one and only Varun sir. So, journey of our team, I'll say, my team. So, when we are listening each and everyone, Neha, Pulat, Varun, and especially for Varun, I said, Varun, one day I got a email or a call and saying, sir, I'm looking for something where I can teach. Once I met him, मैंने कहा इस सेंटर ही तेरा है, तू ही पढ़ा बस। And since then, the way he's there for the kids, for all of the kids who study our center, immense है। जैसे विजुअल में बात करी और सब लोग से, तो उसे आप गेस कर सकते हैं। I say thank you Varun, and अभी तो you are part of a journey. I think a long way to go. We see you at the greater heights, but yes, we'll listen to you. Yeah. Hi everyone. First of all, congratulations. I think I have congratulated you now. You are very Right, so audience so dull. Achievers, तुम लोग भी थोड़ा like कितने अच्छे से बैठे एकदम शांत। And to start with, इन दोनों के पास ये था, इसमें से ये लोग देख के बोल रहे थे। Impromptu is always best. And मुझे पता नहीं था, I have to speak, but ठीक है। Surprise. Okay, surprise are obviously coming. But the point is कि देखो, in the classroom, I will tell them whatever they should do and what they will be doing in the coming months. But as far as I think this is my only interaction with parents, right? So I will just suggest one thing: is be supportive to their journey. Because अगर हम comparison करें अपनी life से, तो when we were there in their shoes, तो तब हमारे पास इतने pressures नहीं थे. And उस जमाने में दुनिया भी इतनी competitive, right? So they are already doing so much, right? जैसे for example extra curricular होता है, सब कुछ होता है, they are giving it up just for competition, right? तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. So I will just say that कि support their journey. जैसे अभी इन लोगों ने बोला है, राइट? तो द पॉइंट है कि जितने भी लोग, देखो बहुत से ऐसा तो है नहीं कि सब लोग दे विल गो थ्रू, राइट? देयर विल बी पीपल जो नहीं जा पाएंगे। जैसे कि आपने मेगा का एग्जांपल देखा, जब पहला बार उसने 12th के बाद दिया है, शी वाज नॉट एबल टू गो थ्रू, राइट? शी गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द मेंटर्स, फ्रॉम द फ्रेंड्स, एंड दैट इज हाउ शी वाज एबल टू सी थ्रू इन द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट। दोनों चीजें होती है। फॉर एग्जांपल ध्रुव इज देयर या सक्षम इज देयर, इन्होंने +2 के साथ ही अपना क्लियर कर दिया। So the point is, it totally depends on the day, on the support. And I will just suggest one thing: be supportive, right? And also just promote their peer group interaction. That is also very important key to this exam. जैसे एक एग्जाम का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, अगर ये पेपर आपको 3-4 घंटे के लिए दिया जाए, तो everyone will be getting good marks, including parents. So the point is, the whole catch about this exam is you have to perform your best in those given 2 hours. वो सबसे बड़ा कैच है एग्जाम का। पॉइंट इज दिस ओनली कि आप इनको मतलब सपोर्ट करें, मतलब जितना ना सपोर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिकॉज वो 2 घंटे में ना हो पाना और जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए बहुत बुरा लगता है जब वो नहीं कर पाता। लाइक दैट इज, आपने सुन ही लिया ना सब कुछ, मतलब मॉक्स क्या है, चीजें क्या है। तो आई विल जस्ट से कि जस्ट बी सपोर्टिव, कुछ मतलब बात करिए,
अपने जो भी वार्ड है आपका कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीज़ आ रही है, राइट? अगर कुछ और भी दिक्कत है, जस्ट कॉल कोचिंग, support. I will just say the support system is very important for these people, right? Because I keep on interacting. खाली मेंटोर लेवल पे नहीं, फ्रेंड लेवल पे भी इनसे मेरी काफी इंटरेक्शंस होती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये डिमांड करते हैं वो डिमांड करते हैं सपोर्ट. I will just say कि just be supportive to them and keep pushing them. They will perform wonders. That is for sure. Right? So that is not the limit. You even know what is the limit, right? Stacking. So that's all from my side. Okay. So when we perform in the classes and actually all the mentors are here, we added a couple of more people in the last 3-4 years, and out of all the list, I requested, like one of the faculty who got more experience than me, when he came to me, then I thought, sir, मैं क्या बोलूँ मैं आपको कि आप मेरे साथ काम करें, sir, please come and join. He joined as a QA and AR faculty. He had a lot of interaction with all the law kids. So, all of सक्षम मेगा अपने बच्चों को यहाँ डाइस पे देखना ना, it's the best feeling for teachers. सब and the parents and the teachers are the only प्राणीज in the universe जो आपको अपने से ज्यादा सक्सेसफुल देते हैं. My kids going to NLUs, being on administrative posts, being in MNCs on the post of vice president and all, it gives me immense joy. And I have expectations from this lot. All these kids are so naughty, mischievous, but they are full of energy, full of life. All of them. सबके साथ almost सबके साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन रहा है. और ये सब लोग याद रहने वाले, ये दो तरीके के बच्चे हैं जो आपको याद रहते हैं. So I think next time when we will be conducting this achievers meet, I want to see at least 5 times the number from all of you. To you kids, I want to say, the way, I mean, don't change yourself the way you are, but keep an eye on everything. Okay, be good in academics, because if you're good in academics, you'll be good in everything. Okay. So college जाके क्या होता है? कॉलेज जाके आपके कैरिंग अवे होने का चांस बहुत ज्यादा होता है. Certain things, there's so many number of things, ये वो extra curricular, co-curricular, everything is okay, but पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना? And being there. Thank you so much. तो टीचर्स को स्टेज मिल जाए तो वो कंटिन्यू करते ही करता है. मैंने पहले तय किया था कि इन दोनों के बाइक के बीच में मुझे आने का मौका नहीं मिलेगा. They requested me, तो मुझे मिल गया. When we celebrate our achievement, success, और सेंटर के सक्सेसेस की बात भी होती है. So as a faculty, obviously we are there in front, we teach, we interact with the kids, we are there in their journey. But एक जो टीम होती है ना, जो उसको मैनेज कर रही होती है, जो उसको लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रही होती है, वो कभी मतलब एक बार जब अचीवर सब लोग हो जाते हैं, फिर एडमिशन के दिन तक उनका रोल होता है, because they take admission, they are the one person who brought you guys to us. तो मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं. रवि कहाँ दिख नहीं रहे? रवि हाँ मैनेज. So अभी हम बुला रहे हैं. हाँ, स्टार लोग ऐसे ही होते हैं. जब पिक्चर बुलाओगे तो I want to
I'll just add to words and then I like once Ravi comes probably have his words. So Ravi is the one person who joined me in 2010 when I started my journey as an entrepreneur. I decided to become a teacher. So by degree I'm an engineer. So I did MTech, IIT Kharagpur, work in a domain of cryogenics for 4 years. But my aim was to work with the people. And so I was at Shanghai and working for 5 days a week, 9 to 5 job. Then I had too much time. I thought, what will I do with that time? Saturday, Sunday, पूरा week कैसे हो सकता है मेरा? Then I had friends and they said, let's do something. And I quit my job and came to Noida. Noida Sector 62 was the one center I started from scratch. So now we have completed 12 years of our journey of and Ravi joins after a month. I and Ravi started a journey and he's the one who take care of center entirely. And almost 12 years तक week off नहीं लिया, अब week off लेना शुरू कर दिया. When he had a daughter, तो हमने कहा नहीं अब week off लो. At least we had a journey like that. We just keep working, keep helping people. Udit is there, Rachna is there, Vimal is there. Yeah, please. This time. करता तुम्ही लोग, मतलब तुम्ही लोग ले क्या? फिर हमें टास्क Thank you, and we will do a great job. Very good. Okay, Ulak, I think we have a latest edition. नए बच्चों के लिए कम से कम. Naren sir, please. So Naren sir has joined with us as a full-time English faculty. He got almost 7-8 years of experience. 10 years of experience. The best part is he has worked extensively the content and also probably, and this is the best part with our team. The Pulak joined the one at a full time, and since then we are the one we proudly say we have a full time faculty team. Part time team तो लोग कभी मिल जाते हैं, but we believe अगर हम full time हैं तो हम लोगों के साथ समय दे पाते हैं. Otherwise, if somebody is working in some domain, उनके लिए मुश्किल हो जाता है. They come and take classes, उनका भी दोस्त नहीं. But that's where we try to build our team. So welcome, sir. Thank you, sir. And yes, everyone's effort and everyone's contribution really matters. So I think we've worked out our achievers, and I hope it was actually a great learning experience for all the aspirants sitting out here. But I'm sure there might be a lot of questions, queries, concerns coming in everyone's mind, and they would, of course, want to talk to our achievers. So the next 15 minutes is now dedicated to the Q&A round. So any questions that any of the students, any of the aspirants sitting here has for our achievers, feel free to do that. You could just simply raise your hand, I would walk towards you, and you could, if the question is directed to a particular achiever, you probably can take the name of that achiever. And if it's a very generic question, I probably can just pass it on to any speaker. So yeah, over to you guys. Questions, queries, concerns, anything that you would want to ask, because for all the 2022 aspirants, December you'll be taking this one. Hello everyone, myself Asha Kunyan, and my question is that how to read a newspaper, because much rubbish is Yes, very common, very difficult. How to read newspaper? So who would like to go ahead with the answer? Yeah. Okay, so newspaper मैं regularly पढ़ता था, and ये doubt मेरे को भी आया था. Is the mic working? Yeah. So ये doubt सबको आता है, मेरे को भी आया था. So basically when you start out with the newspaper, जब आप start करोगे, आपको पहले पेपर छांटना है.
if I use the Hindi word, चाटना है. You need to understand कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना, उसमें time लगता है. फौरन नहीं आएगा. You open the newspaper, you go through the headlines. With the, according to me, मेरे को लगता है कि ma'am, everyone will agree with me. They did today page. For the CLAT exam, that is the most important page that is going to help you with speed reading, with the concept and even with GK. So you start out, you read the major topics. The topics which are coming in repeatedly, you read them very much in depth. Initially आपको लगेगा कि आप 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा हो रहा है, but slowly, gradually it's going to become 40 minutes, 30 minutes. 30 से नीचे नहीं आता, 30 रहेगा. But you know, gradually it will happen. Go through the headlines and just read the stuff which is connected to the news which you see frequently. Like if you've read something in the Manthan, like Manthan, I hope you are doing. So just read that stuff very much in depth, and editorials are very much necessary. I would suggest initially go through everything. And any specific newspaper that probably you would want? I would say if you're just starting out and you do not have a very rich vocabulary, start out with Indian Express and then shift to the Hindu. The Hindu will help you with vocabulary, the grammar, everything. So, बहुत अच्छे पॉइंट है इसका एंड मैं डेफिनेटली वर्क करूंगी. मैं एक काउंटर पॉइंट दूंगा. अपने तरफ से न्यूज़पेपर्स पढ़ो मत, ठीक है? मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं, मेरे पापा ने बहुत लगाए थे. मॉक्स करो और मंथन वगैरह क्लिक करो, हो जाता है, ठीक है? तो इसका वाला तरीका भी है, मुझे 10 रैंक ज़्यादा लेके आया ये, है ना? बट रिगार्डलेस ऑफ आधा ही नंबर ज़्यादा है, लेकिन वो याद रखना है ना? बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, एक काउंटर बैलेंस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो ही. So newspaper पढ़ना है, नहीं पढ़ना? Both. Okay. So next question. Guys, you should have questions in mind. मतलब सुनना is important, but I'm sure कुछ process करा होगा, उसके बाद mind में कुछ आ रहा होगा. Probably how to balance school क्या हो? Hello everyone, so I am Swara and I'm in 11th grade right now. So I decided that I want to do CLAT like 2 months back. But you know जो initial motivation होता है कि अच्छा ये this is for me, I'll do it. But you know after some time when you start doing it, you find out like maybe I'm not made for this. So it's a personal question, but I want to know that what was your motivation or you know motivational factor which finally put you to you know achieve this rank? Right, what was the name again? Swara. Right, Swara. Probably our next achiever. Very bright. Definitely, मैं बढ़िया मैंने बोला नहीं, but all the best to all the aspirants sitting here. And I want कि यहाँ अगर यहाँ 500 आते हैं तो 50 से 70 होने चाहिए पहली बार यहाँ पे. That being said, सर शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था for all the aspirants. See, मैं motivation मानता हूँ, motivation is to give you a push. But a deadly weapon जो कि motivation से ऊपर है, that is consistency. अगर मैं हर रोज अपने आप को थप्पड़ मार के उठा रहा हूँ कि मुझे मॉक्स देना है, तो that is more deadly rather than अब देखो you have taken a step, मुझे फ्लैट करना है. अब सोचना कि यार मैं फ्लैट नहीं करूँ, कुछ और कर लेता हूँ. That is basically diverting yourself. So अपने आप को consistent रखो. Have that thing in your mind कि मैंने अगर goal set करा है तो मुझे करना है, because that will qualify me as a successful human. Right? So have that motivation कि मुझे बस करना ही है, क्यों करना है नहीं करना है, बस ये करना है कि मुझे एनालिसिस बैकग्राउंड करना है. Have that motivation, as in you have to be self-motivated, have that consistency, so that will do the work, I think. So ये आंसर मैं करूँगा, इसमें तो उस कंसेंसस होगा. मोटिवेशन का एग्जैक्ट मोटिवेशन देता हूँ, ठीक है? मेरे क्या मोटिवेशन है? सबसे नंबर 1 पैसा बहुत होता है अगर अच्छा करना, ठीक है? पैकेजेस बहुत बढ़िया हैं, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होते हैं. तो मनी ऑलवेज मैटर. उसके बाद सेकेंडली, ठीक है? तुम देखो, ठीक है? अपनी लाइफ में देखो, तुमको दिख रहेगा कि देयर आर एलिमेंट्स ऑन इन योर लाइफ जिसमें पुल डाउन करते हैं, ये तुमको अंडरमाइन करते हैं, ठीक है? मेरी लाइफ में तो एलिमेंट्स नहीं हैं, ठीक है? तुम कुछ करते हो, उखाड़ते हो, क्रैक करते हो, तुम अंडरमाइन वाले एलिमेंट्स को देखो, ठीक है? वो रिवेंज वाली फील रखो, है ना? रिवेंज बहुत काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, मैं तो अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है? देयर इज अ वेरी यू नो whether मैं पार्शियल काम मानूं अपने आप को, लेकिन रिवेंज वर्क्स फॉलो. Negative motivation works more than motivation. Precisely, ठीक है?
आई हैव फ्यू पीपल जिनको मैं बहुत खुश हुआ मैंने अंडरमाइन किया है, ठीक है? सो वर्क टुवर्ड्स दैट. पैसा एंड credentials, you know, although it would sound really bad out there, but it works. Whatever works works. As long as it works, it's justified. Hello, my name is Nubha and I'm in 11th as well. My question to you is, I was very overwhelmed when I saw the GK. I was like, "ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा." I saw the CLAT modules and I saw the entire vocabulary book. I saw every book that it gave, and I was like, "ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा." And I got very scared and freaked out. But then what I stick to was reading Hindu every day, and I still do that. I would when anywhere there, I kind of have to skip it. My question to you is that there's an entire year of GK that you have to go through when you give the exam and when you start preparing for it. And as you all have been through it, the GK came twice, like basically 2 years ago, Bala. So how do you cope up with that, with the GK content that is already you have to learn, and with the fact that there's an entire year of GK that you have to learn as well? So for that, there are layers basically to that. So there are layers basically to that. Like I said, that I have my sources, Manthan, newspaper, Varun Sargi session and Sardar Sargi session. So where these sessions help are, for example, Manthan. It's a 27-page magazine, data. Other than that, there are questions. So usme all of that is not important. You have to filter out the trend, and that's where Sardar Sargi and Varun Sargi session comes in, where they will tell you कि ये important है, ये important नहीं है. मेरे को याद है मैं वरुण सर से पूछी थी कि सर ये पढ़ना है क्या? ऐसे ये पागल है, यूपीएससी का पेपर थोड़ी देगी है, ये सब क्यों पढ़ेगी? So that's where it helps. Sir will help you to filter out stuff. And then second thing is there. For example, it's a very basic question like India का Vice President कौन? वेंकैया नायडू, सबको पता है. You get that once, you will remember it. Second thing is something which you need to revise 2 or 3 times. You have read that once and you will need repeated revisions to get back to that. So you can annotate or you can do something to get back to it, and you have to go back to it at least once a month. And at the end, more regularly. And third one is जो तुमको कभी याद ही नहीं होगा. There is that category also. For example, there was a supercomputer mystery. जो बच्चे भी 12th में उन्होंने पढ़ा होगा. So their supercomputer mystery is confusing because अलग-अलग supercomputers अलग-अलग IITs and NITs में खुले हैं और मेरे को वो बिल्कुल याद नहीं होता था. तो मैंने छोड़ दिया. मैंने वो CLAT के 2 दिन पहले ही पढ़ा IIT में, पर मैंने वो एक लिस्ट बना दी कि ये चीजें हैं जो मेरे को याद नहीं हो रही और मेरे को CLAT के 1 दिन पहले की पढ़नी है, and I did that. Typical humanities student behavior. So that's what I did, and I think उससे हो जाएगा. Repeated revision are the most important. So basically, Manthan news canvas ये सब तो है ही, तो you could do one thing, क्योंकि वो सब कुछ जो दिया होता है ना, वो it is not important. ये है, कुछ चीजें relevant होती है, कुछ नहीं होती. तो just mark it out and save करके रख लो. फिर उसके बाद या तो तुम मॉक से पहले रिवाइज कर सकते हो कि हाँ मॉक में ये चीजें आएगी, तो वो पढ़ने चली जाती है. या उसके अलावा हमने क्या किया था कि पेपर से 2 महीने पहले रिविजन साइमल्टेनियसली तो किए ही नहीं, पर उसके अलावा रिविजन तब करना स्टार्ट किया था, क्योंकि कभी कभी बीच में भी उठाया था, क्योंकि हमारे 2 कोर्स थे तो शायद उतना टाइम नहीं मिलता था बीच में, बट एंड में वो रिवाइज किया था. उसके अलावा मैंने क्या किया था कि डेट्स एंड हेडक्वार्टर्स जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट क्योंकि एक पेज में लिख दिया, क्योंकि डेट आप कंफ्यूज हो ही नहीं जाते क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है. तो आप डेट अगर आप लिख लोगे ना, तो आप बार बार अगर कोचिंग करोगे तो आपको एक बेग आइडिया होगा कि हाँ ये यहाँ था ये यहाँ था, तो आप ऑप्शन देके टिक करो. एंड थर्डली बात रही CLAT पेपर की, क्योंकि सबकी पढ़ती होती है, किसी को कुछ नहीं आता. लाइक इस बार CLAT के पेपर में मेरे बहुत डर गई थी जीके से, क्योंकि जीके बहुत माय स्ट्रॉन्ग सेक्शन. जो बात करना लोग जीके से बैन करते थे मैं. So I attempted like 25 questions and got 17 marks at the end. तो जब मैं हॉल से बाहर निकली तो I asked the people कि तुम्हारा क्या हुआ. लोग 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, तो मेरे को लगा कि मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. So it's true यार कि यहाँ पे जितने बच्चे हम सबके 17-18 मार्क्स आए थे, but at the same time average marks tend to 12 थे. So when you go over तो उसमें मेरी 15 हाथ हो गए. तो उसमें when you go and give CLAT there, you don't have to have set expectations कि हमारी जीके में 25 से ऊपर आनी है, 30 से ऊपर आनी है. My aim was to be above average, और I think मेरे अपने marks आए because it's a competitive exam at the end of the day. One point which is that दोस्तों के साथ करो बेटर रहेगा, अकेले तो नहीं होगा. मैं सही बता रहा हूँ, अकेले करते जाओगे नहीं होगा, तुम या वही मंथन खोल के पढ़ते रहोगे, बहुत मुश्किल होगा. लोग ग्रुप बनाओ, बैठ के करो, साथ में बैठो, रात को आराम से हो जाएगा. एक चीज होगी ग्रुप कैसे बनेंगे. जैसे जब मेरे को ये सब पिछली बार बोला गया था तो मैंने सोचा था ग्रुप कैसे बनेंगे.
लेके किसी के साथ भी लाइक मैं खुद से वर्चुअली क्लास में गई थी 1 घंटे और अब उन्होंने बोला कि ग्रुप में ऐड, हमने उसे ग्रुप में ऐड कर दिया, हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को इतनी तरीके से, पर हमने ऐड कर दिया. सो जस्ट meet people and just ask them if they want to be in the group and add them. It's easy. And especially अब तो offline classes, we had the problem initially that it was online, but अब तो offline है so you can do it easily and it will be really helpful. Trust me. Hi. Hi guys. First of all, congratulations to all of you. I would just like to ask, like, how you manage your goals and your school life with recognition of that. And I'm going to give. और भी क्वेश्चन मेरा आपको बेसिकली ये है, ठीक है, कि बोर्ड्स जो हैं आपके, ठीक है, उसको आप एक कंजर्वेटिव अमाउंट ऑफ अटेंशन दीजिए, क्योंकि बोर्ड्स खुद से मैटर नहीं करते, सीयूईटी आ गया उसकी जगह पे प्लेस करने के लिए, ठीक है. तो बोर्ड्स सिर्फ अपने एक नॉर्मल हद तक करो. मैंने खुद के अंदर मेरे 15 तारीख तक बोर्ड से थे, 19 को मेरा फ्लैट था, है ना. मैं अपने बोर्ड के एक 2 दिन पहले बोर्ड्स पढ़ा है, उसके पहले मैं क्लैरिटी कर रहा था, है ना. और लेट्स बी रियल, अगर कोई ह्यूमैनिटीज वाले हो तो तुम्हारा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि तुम रीड करोगे तो तुमको चैप्टर अपने आप वाले कॉन्सेप्ट बैठते हैं, तुमसे रिलेट कर पाओगे. साइंस वाले हो तो तुम सही देखो इंजीनियरिंग कर रहे कहाँ आ गए, ठीक है. तो लेट्स बी रियल, तुम्हें बोर्ड को कंजर्वेटिव वैल्यू देनी है, ठीक है. उसको अपनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे कुछ है, ठीक है. तो वैल्यू कम रखो, लेकिन इतना दो कि हाँ, और बोर्ड स्कोर करना इजी है, नॉट द एंड ऑफ द डे. तो इट्स नॉट एंड ऑफ द डे, उसको है कम नंबर क्या है. तो उसमें 1-2 दिन दो, आराम से हो जाता है. बोर्ड्स के अंदर नंबर ले आओगे. फ्लैट शुड ऑलवेज बी द प्रायोरिटी, नथिंग. There's one more thing, like हम लोग बोर्ड देके आते थे, विजुअल और मैं एक्चुअली मतलब हम लोग स्टडी पार्टनर के सब चीजें लाइक मॉक ऑफ भी साथ ही बनाते थे. सो लाइक हम लोग बोर्ड देके वापस आए थे लास्ट बोर्ड, एंड यू नॉट वरी कि हमारा पेपर अच्छा नहीं है, हमारा अच्छा नहीं गया, दोनों अच्छा नहीं गया. मैं ऐसे फोन करता हूँ, मैंने कहा कि यार ये मॉक के अंदर मैंने लॉजिकल नंबर तो बोर्ड से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है. सो एक्चुअली यू नीड टू प्रायोरिटाइज. जैसे सक्षम ने बोला कि भाई 1-2 दिन पढ़ लिया बहुत, मैं ऐसा नहीं कर पाता था. I read it consistently, रोज 1 घंटा 1 महीने पहले से. That was good for me. ये बहुत ट्रिकी वाली बात है. See, whatever we do effectively. मतलब ये I'll not say कि board important नहीं है और class important है. Idea is we need to prove ourselves. We have to be more effective. That's what we need to work. So I think when you aspire to challenge the world and you want to really go to one of the greatest colleges, तुमको थोड़ा different होना ही पड़ेगा. The moment you think in that way, you plan things well. तो board भी क्या है? एक पढ़ने वाली बात है. I think board is, I think for me the equally बाद में भी काम. Yes, hello guys, my name is Saksham and Saksham 2.0. So guys, how do you concentrate on one particular thing? Like there is a website for like aspirations, so it is on the internet. We have to open internet for this, and for personally I got very distracted when I opened internet, YouTube and etc. So how do you guys concentrate on one system? तो देखो बेसिकली तुम्हें ना अभी वरुण वाली बात है ना, जो प्रैक्टिस में मुझे याद नहीं कि बाउंड्री सेट करो, ठीक है. नहीं क्वेश्चन सोर्सेज जो है ना फिक्स करो. बहुत सारे सोर्सेज फिक्स करते हैं. मैंने तो इन्हें सोर्सेज एक्सप्लोर नहीं किया. मैंने मंथन किया है, मैंने न्यूज़ कैंपस को मैंने एक बार इंडिया उसको उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है. मंथन वाज किया इसको नहीं, और मंथन में बहुत सारा ना एक्स्ट्रा सामान होता है जो एलेट में तुम्हारा बहुत इफेक्टिव आएगा, फ्लैट में तुम्हारा इफेक्टिव उतना नहीं आएगा, ठीक है. तो तुम मंथन से तुम देखो ना टॉपिक मिलना क्या है, ठीक है. उसके बाद तुम भाई अपना ये सब पढ़ो, लेकिन नहीं हम करेंगे यूट्यूब वाला निकाल. एक और चीज होती है क्वेश्चन का है ना, तो इसी में लगा जिस वाइस प्रेसिडेंट वाला पॉइंट हुआ था ना अभी, तो वाइस प्रेसिडेंट वाला पॉइंट किया तुमने एक से देखी वाइस प्रेसिडेंट कौन नहीं क्या नाइट तो मालूम है, ठीक है. बट लेट्स से अगर वाइस प्रेसिडेंट पे तुम्हारा पैसेज आ गया 5 नंबर का, उसमें से ये थोड़ी पूछेंगे देखो पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट के कौन से आर्टिकल थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बाद से ट्रिविया टाइप भी तुम बोल देखो. इसके वो है ट्रिविया, हु इज द ओनली इंडिविजुअल अरे चार्ज होगा 100% चार्ज है. मोहम्मद रिजुल्लाह चार्ज ठीक है. अभी चार्ज है. रायपुर का कॉलेज के नाम पे एनर्जी मोहम्मद रिजुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है.
तो ऐसे ट्रिविया देखो, एक टॉपिक पढ़ो है ना, उस टॉपिक का अंदर का तुम और डील करो, बाकी जो तुम टॉपिक जब तक पकड़ने हैं वो टॉपिक तुम मंथन से पकड़ो, है ना। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन मत करूं। कौन सा और तो मैं तुम्हें थोड़ी सी ट्रिकी चीज और बता दूंगा, ये बहुत पहले मेरा प्लीज कभी कभार ना अगर टॉपिक के अंदर तुम्हें थोड़ी लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है 12 लेना था तो टॉपिक का नाम डालो, उसके आगे दृष्टि आइडेंटिटी देना, ठीक है। तुमको भाई बहुत ये ठीक है 10 आ रहा है। थैंक यू। प्रो मिला नहीं। आई गेस आपको क्वेश्चन ये था ना कि इंटरनेट से कैसे दूर रहे हैं ना, रादर देन कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। जो मतलब जो क्वेश्चन ले रहा है उसको तो बताना। देखो अगर हर चीज लिमिट में रहे तो ठीक है, अगर मैं दिन का 15 मिनट यूट्यूब चला और 1 घंटा अपना पढ़ता हूँ मॉक तो ठीक है, लेकिन मैं अगर दिन का 1 घंटा यूट्यूब चला मॉक कर रहा हूँ तो वो ठीक नहीं है। तो अब जैसे आई डोंट नो व्हाट डिवाइस यू यूज, तो ऐसा कई बार होता है कि आप लोग अपने डिवाइसेस पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कौन सा आपको कब कब यूज करना है। अगर इंस्टा स्नैपचैट व्हाट्सएप पे हो छोड़ दो 2 महीने के लिए, वो वहीं रहेंगे, प्रिपरेशन वापस नहीं आने वाली, क्योंकि 5 साल बाद जाके ये थोड़ी देखो कि व्हाट्सएप के चक्कर में मेरा रिव्यू नहीं निकला। तो लेट्स बी लॉजिकल, उन सब चीजों को कट ऑफ कर दो 2 महीने की 4 महीने की बात। बाकी सर मैं एक बहुत आप लोगों को काम की बात बताऊंगा। तो आप सबका कोई ना कोई ड्रीम कॉलेज होगा, राइट? विच इज द ड्रीम कॉलेज? सर NLSIU बैंगलोर। NLSIU बैंगलोर। और सबसे ज्यादा आप कौन सी यूज करते हैं? सबसे ज्यादा आप कौन सी यूज करते हैं? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब पे लॉक लगाओ एंड डोंट पुट द फिंगर, लॉक लगाओ, पासवर्ड डालो NLSIU बैंगलोर। 15 दिन शर्म आएगी, तो खोलोगे ना तो 15 दिन शर्म आएगी, 15 दिन के बाद ना फिर बदतमीज होती है, तो उसके बाद फिर कुछ और ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट डाल देना कि 2 साल बाद माँ बाप घर से बाहर निकालेंगे, समथिंग लाइक दैट। यू नीड टू पुश योरसेल्फ, कोई और नहीं आएगा करने, तुम्हें अपना मोटिवेशन अपने आप से अंदर से ढूंढना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, ये सब बच्चे वो बच्चे हैं जिनको मुझे नाम है, तो अगर तुम टीचर से मिलते रहते और अगर मुझे तुम्हारा नाम याद है, तुम्हें अच्छे बोला न्यूज़पेपर पढ़ना है और किसी ने बोला न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। सो भाई साहब, जब तक आप अपने पिताजी और माताजी की एज के नहीं हो जाते तब तक आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़े बिना मोशन नहीं करना चाहिए। न्यूज़पेपर इज दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और कौन सा न्यूज़पेपर? अभी जब तक आप यंग हो, आपको डेटा की जरूरत है, यू विल गो थ्रू द हिंदू, एंड वंस यू आर मैच्योर इनफ, जैसे 35-40 के एज पे पहुंचो तो यू कैन स्टार्ट द इंडियन न्यूज़पेपर, ठीक है। द हिंदू इज मस्ट फॉर यू, फॉर एवरीवन। सी, आप लोग बनने जा रहे हो क्या? आई मीन आइदर लॉयर और जज। तुमने सोचा है कभी हाउ डज दिस जुडिशरी वर्क? यार जज के सामने तो कुछ नहीं होता, एक ने बी का मर्डर किया, किया इन्हें, हुआ बी का, देखा सी ने रिपोर्ट की नहीं किया, पुलिस आई, उसने पंचनामा भरा, फिर ना इन्वेस्टिगेशन किसी और ने किया, उसकी फाइनल रिपोर्ट किसी और ने भरी, और फैसला कौन लेता है? जज। एंड हाउ डू यू थिंक जज डज दैट? He reads and reads and reads a lot. Okay. पहले मुझे लगता था यार क्या जजेस का क्या है, चले जाते छुट्टी पे, कभी इधर छुट्टी कभी उधर छुट्टी, फिर मुझे लगा कैसे कैसे लोगों से उनका मतलब वास्ता पड़ता है। किसको देख रहे हो डेली? अगर if a person is guilty, वो क्या कर रहा होगा? वो अपना कुछ प्रपंच में लगा होगा। If a person is not guilty, वो रो रहा होगा। किसको देख रहे हो? वकील को देख रहा हो। इन लोगों के बारे में यार सब अच्छे बोलना पड़ेगा। तो जज यार जिस टाइप के लोगों को जज देख रहा है और जिस तरीके से वो अपनी सैनिटी एकदम इंटेक्ट रख रहा है, भाई साहब हेड्स ऑफ टू ऑल द जजेस। यू नीड टू रीड एंड रीड एंड रीड। पिक्चर 3 चीजों से चलती
हमारे जो प्रोफेशन है ना, यू आर लॉयर, सॉलिसिटर, जज और एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ, ये सिर्फ 3 चीजों से चलता है, रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग। तो न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ना नहीं है, भले कोई भी हो। थैंक यू। Just to add on the judge profession, मैंने अभी क्लास में भी कोट बताया था, there is a recent Supreme Court judge who got retired. अपने रिटायरमेंट स्पीच में ना उसने एक चीज बोली थी, अभी रेलेवेंस नहीं है, मैं जस्ट टेलिंग यू कि दोनों पार्टीज को पता होता है कि किसने क्या किया है. It is the judge who is on trial. The point is reading in that. Another thing, you were asking something. डिस्ट्रैक्शन क्या सर ने पासवर्ड बता भी दिया, वो ये भी डाल सकते हैं कि दिमाग खाली है क्या, एक ऐप भी आते हैं सब कंट्रोल करते हैं, हाँ ये सब लोग यूज करते हैं. देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यूज एग्जाम का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यू शुड ऑल्सो नो दिस व्हाट नॉट टू रीड. ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, ऐसा नहीं भावना में पहले से लेकर पढ़ते जा रहे. You should not. And one more thing, Saksham ने बोला कि science side. I have my personal interest in this because in my class too I had science only. So again I will contradict him, and that does not mean I was not able to clear engineering or this science exam. I was able to clear. I cleared I think 2 or 3 exams. That is a different case. I chose this as a career. So I think it totally depends on you. ऐसा नहीं कि साइंस वाले नहीं कर सकते. So I'm sorry to contradict. Mike नहीं दूँगा. There is another question. इसमें मैं एक बताता हूँ, ये साइंस वालों का ही बच्चा है. हाँ ना. सर इसका पापा चीफ साइंटिस्ट है. बाय द वे मैं बताता हूँ, ये अभी बोल रहे हैं साइंस ली है, इनके 10,000 नंबर हिस्ट्री में ही आए थे. साइंस इनको मिल गई थी, ये साइंस वाले दिल से है नहीं, तो ये दिख रहा है. चलिए. So the platform is shifting to camaraderie. Let's get that. Exactly. And our question. Hello everyone, I'm Nancy. I would like to ask that at the time हमारे पास सिर्फ 5 months है, तो आपका डेली या वीकली रूटीन क्या था जो आप फॉलो करते थे टॉपिक्स कंप्लीट करने के? Right. So, personally speaking, 5. Should I? Right. So, personally speaking, मेरा डेली रूटीन यही होता था, एंड हम सब लोगों को ऑलमोस्ट यही होता था. टू एक पर्टिकुलर टाइम सेट होना चाहिए. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब आपके पास 3, 4, 5 महीने बचे होते हैं, तो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट समथिंग. सोना एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए. 12 o'clock 8 बजे उठ जाता था, देन फ्रेशन अप एंड एवरीथिंग, देन 9 से 10 या 11, 10:30 तक रीडिंग न्यूज़पेपर की चीज़ें समझना, न्यूज़पेपर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. उससे इंग्लिश भी हो जाता था, लॉजिकल भी हो जाता था, बिकॉज हमारा पूरा जो क्लैट पेपर है दैट इज पैसेज, राइट. तो उस सेंस में एडिटोरियल इंपॉर्टेंट. न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद जीके का टाइम दिया दोपहर को खाना रिलैक्स करा, चिल करा, फिर शाम से फिर उठाई चीजें जैसे मॉक्स. और मॉक्स मैंने ये गलती करी, आप लोग मत करना. 2 से 4 का जो टाइम स्पेस है उसी में आप अपना पेपर लिखने जाओगे. तो अगर आपको मॉक देना है, मॉक एनालाइज करना है, कोई पैसेज लगाना है, कोई पैसेज में गलतियां ढूंढनी है, ये जो काम होना चाहिए वो आपका इस 2 घंटे में होना चाहिए. बाकी जो छोटा मोटा काम है सीखे ऊपर नीचे हो सकता है, शाम को पढ़ लो, रात को सोते हुए पढ़ लो, या फिर सुबह उठ के पढ़ लो, लेकिन इन 2 घंटे में सिर्फ ये होना चाहिए. बिकॉज द डे ऑफ द पेपर पे आपको नींद नहीं आनी चाहिए पेपर देने से पहले, राइट. आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने पूरे साल 2 से 4 बजे तक ये किया, तो मैं आज भी 2 से 4 बजे यही करूंगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखना. बाकी टाइम टेबल बहुत सब्जेक्टिव चीज है, जिसको जो सूट करता है. कोशिश करना, मैंने भी ये किया आखिरी के दिनों में कम से कम मिनिमम 8 आवर्स तो दो अपनी प्रिपरेशन को. बट दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि 8 घंटे दोगे तो हो जाएगा. 6 घंटे भी अगर एफिशिएंटली दे रहे हो तो इट वुड वर्क. एक और बात, ब्रिजवेल और मैं जाते थे साथ में वॉकिंग में, हम लोग एंड एवरीवन इज अ विटनेस है, हम लोग 1:30 बजे जाके बैठ जाते थे. 1:30 वी यूज्ड टू बी देयर, एंड जैसे रियल पेपर के दिन हम लोग बैठते, वी यूज्ड टू सिट डाउन, fill up our marking details and make it. Although that did not take so much detail and
That is all. That is basically because timetable एक काफी subjective चीज है. आपको जो सूट करता है वो करो, but कुछ भी key pointers हैं, वो आप ध्यान रखो. That will be the work. एक मैं बताना चाहता हूँ, एक और बच्चे लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। टॉपिक में बहुत बड़ा लगे हूँ, लेकिन ऑलवेज में एक चीज बोलता हूँ, किसी भी चीज को आपको अचीव करने के लिए जो भी गेम में नंबर लाते हैं, जो नंबर लाता है आगे बढ़ता है। आप किसी से भी लाओ, ये सब नंबर लाए, ये इसलिए यहाँ बैठे हैं, मैं नंबर लाया, मैं हो गया। चाहे हम लोगों को प्रमोशन देते हैं, एवरी ईयर हम कई लोगों को प्रमोट करते हैं, जिनको नंबर भरते हैं वही प्रमोट होते हैं। चाहे आप जिंदगी में रिटायर हो गए तब भी नंबर का गेम होता है। अब जज साहब है, उनको जरूर नंबर का गेम नहीं देता है कि वो एक ही रहते हैं, तो आप में कोई जज भी बन सकता है, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में नंबर का गेम होता है। आपको नंबर लाना है, चाहे कैसे लाना है, टैक्टिस जो वो टैक्टिस बनाओ या कोई भी टैक्टिस बनाओ, लेकिन नंबर लाना है, तभी आपको एग्जाम में सक्सेस मिलेगी और उसी में एक गोल होगा। और आपको नंबर लाने के लिए पूरा जो भी उन्होंने बताया, मॉक करना, ये करना, सारे लोगों को, जितने भी एस्पिरेंट है, मैं ये बता देता हूँ, आपका फोकस रोज नंबर होना चाहिए कि एवरीडे मेरे मॉक में नंबर कैसे बढ़े। मॉक में यदि नंबर नहीं बढ़ना है तो फिर ट्राई करो, अपने मैडम टीचर से कॉन्टेक्ट जैसे आपने बोला, तो ये सब आपको करना। और एक चीज मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, एकेडमी कॉलेज से में जब तक आप एकेडमी में नंबर नहीं रखोगे, चाहे आप 100 एक्टिविटी आएगी, सभी दूर काम करना है, लेकिन आपके एकेडमी आप बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी आप होता है सोचो कि मैं इस कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट होके जाऊँ, इस कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनूंगा तो मेरा कुछ होगा नहीं। तो लोग उन्हीं को उठाते हैं जो टॉप होते हैं किसी भी कॉलेज में। Thank you so much, sir. That was indeed helpful. और एक और चीज है, बोर्ड के बारे में जो मेरा बड़ा जरूर बोल रहा है, लेकिन मुझे मालूम बोर्ड नंबर से नंबर आया वो, तो इससे कंफ्यूज मत होना क्या, क्योंकि बोर्ड में वो जरूर लाएगा, तो बोर्ड पे भी प्रॉपर ध्यान देना है। लेकिन ग्रेड इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को इक्वल बैलेंस करना है। लेकिन हो सकता है कि ग्रेड का आप ज्यादा वेटेज दो, क्योंकि सब कुछ वेटेज का रोल है, लेकिन बोर्ड को भी हम हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारी प्री क्वालिफिकेशन है। जो बोर्ड में पास नहीं होगा उसको ग्रेड में पास होने के बाद कोई एडमिशन नहीं देगा कॉलेज में। तो बोर्ड को हमें जो प्री कंडीशंस है, हम बड़ा बड़ा टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, हम कोई प्री टेंडर में पार्टिसिपेट प्री क्वालिफिकेशन में कर लेंगे, हमारी कंपनी आज की तारीख में, तो आपको बोर्ड में भी प्री क्वालिफाई होना है। 60% जो भी क्राइटेरिया होगा क्लियर करने से जानता नहीं हूँ, कॉलेजों का नाम सर आया जहाँ पर जा रहे हैं 45 तो 45 क्राइटेरिया है, लेकिन वो क्राइटेरिया भी कहीं मिस नहीं हो जाए, इसलिए इतना भी क्लियर के लिए मत सोचो कि वो क्राइटेरिया अचीव होना चाहिए। तो मेरा ये आपसे है कि सब पे बैलेंस करिए, और बैलेंस लोग सक्सेस होते हैं, इन सब पे बैलेंस करिए। ये जरूर आपको मैंने कोई मिसगाइड कर दो बताइए, सब चीजें प्रॉपर डांस दीजिए, क्योंकि आज ये अचीवर है, बट इसलिए आप इनकी बात मान रहे, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, इनसे इनपुट लीजिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी खुद की होती है। स्ट्रेटेजी विन द रेस्ट, अभी वो सब हो गया कि स्लो इंडस्ट्री विन नाउ पे ग्लोबलाइजेशन, स्लो इंडस्ट्री, और जो इन्होंने पूछा सेक्शन में इंटरनेट को भी यूज करना, slow and steady wins the race, but अब हो गया the fastest and consistent will always win the race. इन ग्लोबलाइजेशन also win the race, आपको ग्लोबल में भी रहना है, तो बिना ग्लोबल यू कैन नॉट विन द रेस। और दूसरा ये है कि इंटरनेट जो है वो एक अच्छा इंफॉर्मेशन गेटवे है, उसका सदुपयोग करो, उसका मिसयूज मत करो। उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपको एग्जाम को क्लियर कराएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर फिल्टरिंग आना चाहिए, क्योंकि वहाँ इंफॉर्मेशन टू मच है, आपकी डाटा माइनिंग एल्गोरिथम अच्छी होना चाहिए। थैंक यू। Thank you so much, sir. I guess parents will always have their sentiments attached with boards. We cannot take that away from them. So, okay, old school matters. So now, I guess that was a very, very helpful and interactive session for both of us, and we all enjoyed. Now it's time to felicitate all our achievers. So please, huge round of applause. And it's a very proud moment for all of us, and what they have given us cannot be reciprocated other than love and blessings and more. But still, there's a small token of love that we would like to present to them from our side. And a special mention for all the parents who have been part of their journey, an indispensable part of their journey. So that would be very great if I can please call upon the parents of the respective achievers.
achiever to please come up and felicitate your own child because this is your moment too. So we would like to begin from Dhruv and Dhruv's parents. Can you please have you on stage, ma'am, please? And Raman. Sir, please. Now can we please have Saksham Rai's parents on the dais, please? Saksham, please. And Amit sir, please come forward. आपने जिन बच्चों को ज्ञान दिया वो सच में अंतिम है और जो आपका नाम लिखेगा वो बनने भी हो जाएगा जैसे सक्षम को अपने बिना रेंज रखा था थोड़ा सा मुझे गया इंटरव्यू बेंगलोर रखा था और पलक मैडम से मैं कंट्री से बात करता था तो किस तरह से बेंगलोर पकड़ा जाएगा आइए Now can we please ask Varun sir and Akhil's parents to please come forward. Akhil, please join us. Huge round of applause for Akhil. It's your moment. Pose. Thank you so much. Now can we please have Naren sir and Visual's parents on the dais, please. Visual, please join us. Hello, good evening everyone. दो बातें शेयर करनी है मुझे मौका नहीं मिला रीडिंग की बात करी थी ना यहाँ पे सबको पता है कि ऑलवेज टॉक अबाउट सक्सेस लेकिन रीडिंग का इम्पोर्टेंस बता देता हूँ आई वाज 22 ईयर ओल्ड तब से मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ आफ्टर कॉलेज आप जानते हो कितना प्रेशर होता है घर पे कि हाँ आपको अर्न करना है सक्सेसफुल होना है बट द बेस्ट पार्ट आई डिड आई यूज्ड टू रीड अ लॉट पता नहीं कहाँ से पता चल गया था किसी टीचर ने बोल दिया था या कहीं पढ़ लिया था कि रीडिंग से होगा मुझे भी कैट IIM जाना था नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली बट रीडिंग हेल्प 10 ईयर मैं 10 years ऑफ माय लाइफ आप ये समझ लीजिए कि जो पैशन बिजनेस नहीं कर सकते बट जो IIT वाले अर्न करते हैं स्टार्टिंग में या लेटर ऑन वो मैंने अर्न किया हुआ है 10 years ऑफ लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग नथिंग एल्स नो ट्रेनिंग नो कोचिंग नो डिग्रीज रीडिंग की वजह से मुझे 10 years की मैंने जॉब किया हुआ है और सक्सेसफुली कर रहा हूँ अभी भी तो मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ रीडिंग इज अ वंडरफुल थिंग जस्ट गो फॉर इट एकदम कंप्लीट आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है रीडिंग से एंड जीके में हेल्प करेगा और आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा ग्रुप डिस्कशन में हेल्प करेगा आपका वोकैब रीडिंग अच्छा होता है ग्रामर अच्छा होता है मतलब आई कैन जस्ट गो ऑन 10 से 12 ऐसे डेफिनेट वो जो बेनिफिट्स हैं इसके जो आपके एग्जाम में यूज होते हैं ठीक है तो 1 hour 1.5 hour या फिर 2 hours इतना भी दीजिए अगर टाइम नहीं मिलता है तो आपको सोने से पहले आप कर सकते हो जस्ट रीड अलॉन्ग इफ यू आर नॉट रीडिंग ओवरऑल आप पर्सन तो भी बन ही नहीं सकते आप स्टूडियस बन सकते हो मार्क्स आ जाएंगे लेकिन आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाके फेल हो जाओगे वहाँ पे आप अधूरे रह जाओगे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो थॉटफुल नहीं होते ठीक है जॉब अच्छे से कर लेते हैं वो लोग इंजीनियर है कोई भी है लेकिन रीडिंग आपको बहुत कंप्लीट कराएगा अभी आपको बहुत बड़ी बात नहीं बतानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग का बहुत रोल है आपका ग्रुप डिस्कशन ऐसे राइटिंग स्पीकिंग के लिए भी एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है सो जस्ट गो फॉर दूसरा पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं कोई बात कहना चाहूँगा मैं कि हम हमेशा सक्सेस के पीछे तो हम हर किसी को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं लेकिन व्हाट
guys going through, वो भी थोड़ा समझना कि इनके साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो कई बार हम लोग तो इतना प्रेशर डाल देते हैं ना बच्चों पे कि दूसरा जो साइड है ना उस पर हम कभी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ये देखना कि कई बार होता है क्या है, बच्चे लोग बोलते रहते हैं हमेशा कि सर घर वाले सिर्फ रिजल्ट की बात करते हैं और मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को बता भी नहीं सकता। सो बी टू योर चिल्ड्रन, एंड अगर उन्हें कुछ भी अगर आपको लग रहा है ऐसे अजीब बिहेव कर रहा है या मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसकी कोई और भी वजह हो सकती है। तो टॉक टू देम और बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, दे विल डू वंडर्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Huge round of applause for Vijay and his parents. Okay, next can we please have Samriddhi's parents and the one and only Pulak ma'am on the stage, please. Now can I please ask Ramanu sir to please come forward again, and Shaurya's parents. I think Neha should do this. So please look in. And Megha, please come forward. Last but definitely not the least, we have way to go from here. Megha joining us. And Megha's parents, please come forward. मेरे साथ मेरा भी एग्जाम हो रहा था, स्टे इन माय सोसाइटी ओनली। Congratulations, sir. So congratulations once again to all the achievers and the proud parents. Thank you so much for being a part of this journey and blessing your children and of course giving us the achievers that we are celebrating today. Thank you so much. Over to you, Pulak ma'am. So thank you, like a big thank you to everyone for actually taking out time on a Saturday evening, being part of the event. I actually was panicking a lot, kaise hoga, kya hoga event, but touch wood, it turned out to be like nice. And so I'm happy that you guys came. I'm getting emotional at the moment. So yeah, I think, it's okay. So all of you can just chit chat, have refreshments and enjoy your time. Thank you. And lastly, 3 cheers for the achievers. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Thank you guys, thank you everyone. Thank you. Can we please proceed towards the refreshments? Thank you. And the achievers will take the mindset with all of us. That is a must.